व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो पे। तो अभी इधर मैं हूँ हमारे छत पे मेरे डंबल के साथ पे, ओके। एंड अभी इधर मैं ले रहा हूँ मेरा प्री वर्कआउट मील, जिसपे 250 ग्राम बनाना, 120 ग्राम ब्रेड, वाइट ब्रेड, ओके। एंड इधर ले रहा हूँ मैं 250 ग्राम दही कॉर्ड, ओके। तो अभी मैं इसको खाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा टाइम के बाद ट्रेनिंग करेंगे मेरे भाई लोग के साथ। ऑल्सो आजकल हमारे पसल का हेड मिस्त्री भी मेरे साथ ट्रेन करते हैं, ओके, ट्रेन करता है। एंड उसको मैं अभी सिखा रहा हूँ। एंड उसका भी जब हमारे गैरेज पे आए थे वो, उसका वेट था अराउंड 44-45 किलो। अभी उसका वेट ऑलरेडी हो चुका है 48 किलो। तो अगर आपको भी वजन करना है तो हमारा वीडियो देखिए, ओके। मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, सबके बारे में, ओके। ऑल्सो मेरे भाई भी अभी मेरे साथ ट्रेन करेगा। भाई का अभी थोड़ा इंजरी हुआ था, थोड़ा टाइम पहले कबड्डी खेलते टाइम आया, उसके बाद से थोड़ा हेवी लिफ्ट नहीं कर पाता है, बट मतलब बॉडी एक्सरसाइज करता है, लाइक पुलअप्स, पुशअप्स, ओके, एंड डिप्स, ओके। अच्छा, रनिंग भी करता है आर्मी के लिए, ओके। अभी मेरे मिल खाऊंगा, उसके बाद अराउंड 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे, जिसपे हम आपको दिखाएंगे हमारा नाइट वर्कआउट विथ माई बॉयज, ओके। तो खाएंगे हमारा प्री वर्कआउट मिल। आप लोग भी थोड़ा इस टाइप का मतलब कैलोरी डेंस फूड खाओ, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत ज़्यादा है, आल्सो प्रोटीन दही से थोड़ा कुछ मिलेगा, बट ज़्यादा फोकस कार्बोहाइड्रेट पे है हमारा। आप लोग ब्रेड को थोड़ा फ्राई करके मतलब थोड़ा सेक के भी खा सकते हो, वरना ऐसे ही खा सकते हो, वाइट ब्रेड, ओके। कुछ इस टाइप से खाते हैं हम। इससे क्या होता है कि ब्रेड सिर्फ अकेला अंदर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, अगर बनाना खाएंगे तो जाएगा अंदर। बॉक्सिंग, ओह व्हाट द फक मैन, आई एम लुकिंग डैम गुड। इधर आप लोग हमारा अभी का फार्म देख सकते हो, गाय का फार्म। एंड उधर हमने किया था बाथटब पे वीडियो, ओके। एंड अभी गाय लोग उधर बाथटब कर रहे हैं। ऑल्सो इधर अभी बड़ा गाय का फार्म रेडी हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ आवर करेंट काउ फार्म। Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like down and I'ma get it right. Dead on sight like been down and I'ma get it right. Dead on sight like never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Yeah,
I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and read out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts instead. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it, wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, Just like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. सो गाइस ट्रेनिंग हो चुका है कंप्लीट हो गया हमारा ट्रेनिंग थोड़ा इंटेंस टाइप का था तो ट्रेनिंग हो चुका है कंप्लीट तो अभी मैं लूँगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील जो कि है 500 ग्राम वाइट राइस उसके बाद 200 ग्राम चिकन तो ये मेरा फ़िलहाल का मतलब पोस्ट वर्कआउट मील है एंड दिन में 2-3 टाइम में कुछ इस टाइप का मील लेता हूँ जो खाने में टेस्टी भी होता है कि तो वो ये अभी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो थोड़ा शॉर्ट टाइप का था एंड वही है ओके तो अगर आप लोग ने हमको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो इधर मेरा भाई का यूजर नेम आ रहा है तो उधर आप लोग हमको फॉलो करो इंस्टा पे उधर हम लोग बातचीत करेंगे ओके तो वही है ओके गुड नाइट गाइस जय श्री राम।
हाँ भाई ग्लव्स खोल के ही खाऊंगा मैं वैसे नहीं खाऊंगा तो ओके हाथ भी धोऊंगा सिर्फ ग्लव्स नहीं खोलूंगा आगे